पानी से मेरे को अभी भिगोने वाले हैं। जैसे ही नानी कम आउट, मैंने बोला 10 मिनट का टाइम दे दो। सही है, सही है। हेलो 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 रश्मि बहन, हाय। केम छो? हाय सैमी। हाय मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। फाइन फाइन। आजकल तो मैं भी बोल रही हूँ केम छो, શું છે, સારું છે। हाँ, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ आना है। नहीं, आई एम हियर, आई एम ऑलरेडी हियर मैम। हाँ, हाँ, वाओ। हमने आपको सैमी दे दिया गिफ्ट में। अच्छा, हाँ, सैमी शिफ्ट हुई है गुजरात में। सैमी आप गुजराती बन गए हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और गुजरात तो वैसे भी वैल्यू एकदम उसकी हाई थी, अभी तो बहुत हाई हो गई यार। हमारी दिल्ली सोनी हो गई। हाँ, सही और है। भी कलरफुल हो गया। हाय करुणा, so Hi, nice to see Karuna everywhere. I love I you know. for this, really, so nice. चलो चलिए श्वेता जी, shall we start? Thank you. हाय दोस्तों नमस्ते, मैं पारुल। स्वागत है आपका डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के शनिवार के सेशन में। होली हमारे बिल्कुल जो है कल शुरू हो जाने वाली है, हालांकि बहुत जगह शुरू भी हो गई है। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और उसके साथ ही आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो उनके साथ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमें समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे भी सीख रहे होते हैं और हम भी सीख रहे होते हैं। तब हमारा उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से हमें उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि उनका एक सर्वांगीण विकास भी हो सके और वो खुश भी रह सकें और उनके भविष्य की अच्छे भविष्य की नींव भी रखी जा सके। इसके लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नीना वैद्य जी हैं। डॉक्टर नीना, आपका स्वागत है। और डॉक्टर नीना का विधिवत रूप से परिचय देने के लिए मैं अपनी प्यारी सी दोस्त समीक्षा सचवान को इनवाइट करना चाहती हूँ। समीक्षा। Thank you so much, Parul, and good evening, everyone. Today, before starting the session formally, I would want to take a moment to say a few words about the encounters we had with different organizations and institutions during the past few months. Whoever we were trying to collaborate on different activities under the umbrella of Down Syndrome Federation of India, every time, every team, their leaders of the organizations was in awe of the kind of extraordinary achievements our champions are reporting, and also the kind of work Down Syndrome Federation of India is doing in the country. If I were to sum up what was said to us, it is very remarkable and commendable that the federation has supported every new family that joins its fold over the previous 40 years. Additionally, the manner it unites all the stakeholders in every state on a single platform to save the lives of newborns with Down syndrome. The merit is, it is outstanding, they said, and they said the effort are laudable and merit commendation. And this March, the World Down Syndrome Day celebration have really reached their peak of grandeur. I'm mostly speaking from the side of the federation. Me and Parul, we are mostly speaking on the side of the federation, but today I am bound to speak on behalf of the entire Humsafar family and people we have met in the past few months, that we are so grateful for DSFI. And of course, you have all heard Dheera ma'am saying, I'll go if you say thank you to me. So the kind of support we are getting, the experts like Neena ma'am, that, we are so grateful for Federation and the entire cognitive system behind it, our dear Rekha Ma. Thank you for making us realize the meaning of helping each other, lifting each other up, and supporting one another as we learn and evolve together as Humsafar. And coming back to today's session, yes, that one of a kind person we have with us, so evolved
and so much of hard work she's put in to learn about the people with Down syndrome and the kind of things she is adding to community. And Parul, I have no doubt that our audience is more interested in hearing from our expert of today than from us talking about her, as unka to naam hi kafi hai. And if it will not be wrong if we put it like this, that she is an institution in and of herself, based on the kind of work she has been doing to empower parents and children with Down syndrome. Parents, please directly join me and Parul and Federation in welcoming one of our champion parent, a pediatrician, a counselor, a friend, a philosopher, a guide, Dr. Neena Piyush Vaidya. Ma'am, welcome. Over to you. And yes, we want to learn everything from you. So any word you speak here, it becomes the the guiding light for us in in our own journey of parenting a child with Down syndrome. Thank you, Sammy. Thank you. Thanks a lot for the kind words you used. And hello, everyone. Good evening. And do I need to repeat everything in Hindi and English, or it's okay? One language would be fine. Mix Both? रखिएगा, Okay. mix रखिएगा मैम. Okay. Okay. Thank you. So starting with the session. And yes, good evening, everyone. Good evening, Dikshita, and all the moms who are wishing me on the writing the wishes on the chat box. So starting today's topic, today I have just talked with Brinda and Parul that I will be mentioning a few things in first 15-20 minutes. And then majorly we'll be having a question answer session, because every time it happens that by the time I complete with the topic, the time gets over and so many questions remain unanswered. And though we answer the question somewhere here or there, parents, moms, they feel that my question remained unanswered. So today I have planned to do that way. See, with improving, increasing awareness, जैसे जैसे awareness बढ़ रही है, and since past few years, thanks to Rekhama and lot of people who have been trying day and night to let things percolate from higher levels and reach to every corner of India. And thanks to COVID, we should not thank, but thanks to COVID, that COVID brought us all together very naturally, and we all learned to use internet and use such kind of platforms. And so our bonds became stronger because of using this virtual platform. ये बार बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिलने की वजह से हम लोग ना एकदम से क्लोज हो गए हैं. सो अभी डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रहा है. कहीं से भी कहीं पे भी हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में, एक्सेप्टेंस में. Now IAP has come forward, which I was, I wanted this to happen since many years. It has happened. So new achievements. So we are now achieving day by day. We are achieving. We are going to next step. हम हर रोज अचीव कर रहे हैं. So everything come with new achievements. There are new challenges. तो अब तक था कि बच्चे दिखते नहीं थे, तो प्रॉब्लम्स ऐसे आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वर लेस, बिकॉज बच्चों ने दुनिया ही नहीं देखी थी इतना. जैसे नाउ दे गो आउट लाइक अदर चिल्ड्रन, दे पार्टिसिपेट इन फैशन शो, डांस परफॉर्मेंसेस, वो अपने आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ग्रुप बना के, दे गो ऑन फॉर अ पिकनिक, दे गो फॉर ट्रैकिंग. तो अभी उनको ये दुनिया देख रहे हैं. they are seeing the real world, and so they want to do certain things for which maybe we were not ready. Not ready for certain things. So newer achievements came with new challenges. So what are the challenges? So we have discussed many times about privacy. बहुत बार हमने बात की है प्रिवेसी के बारे में. एंड यूजुअली पेरेंट्स का रहता है क्वेश्चन कि एट व्हाट एज इट शुड बी स्टार्टेड.
तो देर इज नो एज, ये भी हमने बहुत बार बात की है कि बहुत यंग एज से उनको पर्सनल स्पेस के बारे में बताना चाहिए। तो नाउ बहुत ही इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी टू लेट देम नो अबाउट अपनी पर्सनल स्पेस एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड समबडी एल्सेस पर्सनल स्पेस। अभी अभी जब भी ओपन सेशन ओपन फोरम रहते हैं तब बहुत ही मॉम्स ये कहती है कि मैम नाउ इट्स टाइम कि हम बहुत बार वी टेक देम फ्रीली आउट फॉर एनी फंक्शन एनीथिंग, लेकिन वो किसी एक को जिसका भी फंक्शन होता है दे वांट टू बी देयर ऑन द स्टेज, दे वांट टू बी विद दैट पर्सन। तो ये सारे इश्यूज बहुत ही बढ़ रहे हैं कि बच्चे क्लिंग हो रहे हैं, उनको ही बात करनी है, उनको जो मेन पर्सन है, हम तो गेस्ट है तो हमें विश करके वापस आ जाना है। ये चीजें उनके दिमाग में नहीं जाती है बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस वो हमें समझाना है उन लोगों को बहुत कि मेरी पर्सनल स्पेस में कोई नहीं आ सकता, एंड लाइक सिमिलरली वैसे वर्सा इज ऑल्सो ट्रू दैट मैं किसी की पर्सनल स्पेस पे नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। लेकिन हाउ टू स्टार्ट दिस, ये बहुत ही बेसिक इश्यू है। ये बहुत आसान है कहना कि भाई बच्चे को पर्सनल स्पेस के बारे में बताओ, make them understand about personal space, but how to make them understand about personal space? So the first step, or we talk about a lot about good touch bad touch, लेकिन गुड टच बैड टच कैसे पता चलेगा? सपोज किसी ने छुआ, सपोज हमने पिक्चर पे बता दिया है कि दिस इज गुड टच, दिस इज गुड टच, यहाँ पे गुड टच। इट्स नॉट एवरी टाइम। अगर किसी ने मेरे से शेक हैंड किया और यहाँ पे मुझे यहाँ शेक हैंड करते वक्त यहाँ पे ऐसा किया, देन इट इज नॉट अ गुड टच। किसी ने यहाँ टच किया लेकिन ऐसे किया, देन ऑल्सो इट इज नॉट गुड टच। बट हाउ वी विल मेक देम अंडरस्टैंड दैट गुड टच बैड टच बहुत आसान है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले गए हैं, देर आर लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, एंड वी थिंक by showing them the pictures and everything, we think that we have informed them about good touch and bad touch. But how will they recognize whether whatever touch experienced by them was a good touch or bad touch? So for that, today I'm going to just बहुत ही ज्यादा इस बारे में I want each parent to understand this very very clearly कि उनको अपनी इमोशन अंदर क्या हो रहा है वो जान पाना। तो टू मेक देम अवेयर अबाउट, जस्ट अ मिनट, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, टू मेक देम अवेयर अबाउट देयर ओन इमोशन। फ्रेंड्स अपने म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। उनको खुद को क्या फील हो रहा है वो उनको बहुत ही, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक देम अवेयर अबाउट देयर ओन फीलिंग्स। तो ये सीधा गुड टच बैड टच से शुरू नहीं होगा। जैसे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, वी स्टार्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग, that if you will start talking about the body part and one day suddenly at the age of 11 12 or maybe 14 15 years, if you will start telling your child that don't allow anyone to touch, don't go and hug anyone, आप ये नहीं कर सकते, आप घर के लोगों को ही हग कर सकते हो, बाकियों को आपको हाई फाई देना है, it's not going to happen. likewise गुड टच बैड टच अगर उनको नहीं पता है, अदर फीलिंग के बारे में नहीं पता है कि सपोज आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड, ये उनको अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे, देन ये पूरा जो है हम आगे जो उनको लेके जाना चाहते हैं कि उनको एक्सप्रेशन नॉन वर्बल थिंग समझना, बिकॉज नाउ वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द रियल वर्ल्ड, वी हैव क्रिएटेड प्लेटफॉर्म फॉर देम so that they can go anywhere like other typical peers. Then at the same time we have to make them understand many things like non-verbal communication, like touch कैसे पता चलेगा. So before they can identify the touch, they should be able to be aware about their own emotion. तो ये कैसे करना है? तो मुझे मेरी बेटी को सिखाने के लिए खुद को करना है कि जैसे मैं टायर्ड हूँ, मैं कहीं पे थक गई हूँ, किसी का पता नहीं, मुझे ही Brinda, बहुत can we mute all others, please? Yes, there's a disturbance coming. Thank you.
I'll do one thing. I'll mute everyone. Neena ma'am, you unmute yourself. ठीक है? हाँ. One second. तो दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम माय साइड कि मेरी जो फीलिंग है आई विल स्टार्ट वर्बलाइजिंग एंड जैसे अगर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या तो आज तक उनको ये इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है समथिंग ऑफ दिस टाइप, देन एज आई सेड ऑलवेज कार्ड से कनेक्ट करना है कि इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन, तो मे इट बी हैप्पीनेस, मे इट बी एक्साइटमेंट, मे इट बी अप्रिशिएशन बाय समवन, कुछ भी हो सकता है. लेकिन फॉर ऑल दोज फीलिंग्स इनिशियली वी विल बी यूजिंग ग्रीन कार्ड ओनली इफ द चाइल्ड इज फीलिंग गुड. If the child is neither good nor bad, then yellow card, and if the child is not feeling good, the red card. So it is very important because to understand own feeling is the core reason for any behavior, to understand the outer world, to understand your personal space, and to understand somebody else's personal space. It is very important to know what is happening inside first, because no emotion can be right or wrong, as we have talked earlier also. The behavior, the action which is the outer expression of the inner feeling can be right or wrong. तो अगर हम उसको एड्रेस करेंगे तो कब एड्रेस कर पाएंगे? जब बच्चा खुद अवेयर होगा और बच्चा बता पाएगा कि एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज somebody scolded, I was feeling lonely, somebody rejected, bullied, got less marks, whatever he could not perform in spite stage पे जाके कुछ नहीं कर पाया. तो all those things, then gradually, so initially it would be only red card, and then we will keep on adding the feelings which are not good. Similarly, a green card which will make them अंडरस्टैंड कि गुड माने क्या, कि वाई वॉट एवर, बहुत खुश हूं तो क्या है, क्या हुआ इसकी वजह से खुश हूं. देन वी विल बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड बाय टचिंग कि ये टच से क्या फील हुआ और ये से क्या हुआ. ये से पता ही नहीं है तो हम कैसे उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप टू मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टॉपिक ये वाला है और ये बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स को, क्योंकि एंड फैशन शो माने सर्टन जो एक्टिविटीज है जैसे कि डांस शो करना, डांस सीखने जाना, फैशन शो में पार्टिसिपेट करना, फॉर these activities you need to be very careful. We all know that. तो how to make them understand? तो उनको बहुत कंफ्यूजन होगा कि आप ही ने तो मुझे इसके ऊपर डाला है, आप ही ने तो ऐसे ऐसे करके चलने के लिए बोला है. नाउ व्हाई यू आर टेलिंग कि ऐसे मत दिखाओ, ऐसे मत झुको. तो इट वुड बी कंफ्यूजिंग फॉर देम. सो फॉर दैट तो करो, हर कुछ सब कुछ करना है. वॉट एवर अपॉर्चुनिटी दे गेट, कुछ भी मिलता है तो वो सब करना है, लेकिन इसके लिए द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नीड टू बी देयर. लेकिन रीता मैम यहाँ पे मैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो मैं चाहूंगी आप उस पे भी रोशनी डाल दें. हाँ कि हाँ. अगर बैड टच है और बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है तो वो क्या हाँ करेगा? हाँ, तो इसीलिए वो सर्कल है. बैड टच तो है और इसीलिए दे आर विक्टिमाइज्ड बिकॉज उनको जो एक्ट हो रहा है वेदर इट इज वर्थ कंप्लेनिंग और नॉट, वो ही नहीं पता है कि इसकी मुझे कंप्लेन करनी चाहिए कि नहीं, ये ही नहीं पता है. एंड दैट इज वाई हमने जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं कि भाई आप हग और लैप में ये इतने लोगों के ही बैठ सकते हो, और कोई भी है, मैं नेक्स्ट पे उसके पर आती हूँ, क्योंकि ये जो अदर साइड है ना, उसमें वो लोग दूसरे को देख के बहुत कंफ्यूज होते हैं. इसलिए मैं आ रही हूँ उसके ऊपर कि हमें इतनी इंटीमेट जो है बॉडी का कांटेक्ट, ये फादर मदर, रियल ब्रदर सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स ऑल, और किसी से भी नहीं करना है. एंड we as a parent, we should make
our first circle and second circle informed about this. अदरवाइज क्या होगा, मेरे देवर को बुरा लगेगा कि अरे यार ये क्या बात हुई, पलक को आप मुझे नहीं हक करने दे रहे हो। तो ये चीज उनको बतानी है, बिकॉज दे कांट देन डिस्क्रिमिनेट कि मैं अगर चाचू को कर सकती हूँ तो मैं उसके फ्रेंड को भी कर सकती हूँ, या ऐसे कोई मुझे अफेक्शनेटली बुलाता है तो उसको भी कर सकती हूँ। तो हमें फर्स्ट और सेकंड सर्कल को ये इन्फॉर्म करना है कि बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर देम इफ अलाउड टू हग अ मामू और चाचू or cousin, then they will not be able to hold themselves if somebody else also show the same level of affection. तो ये रहता है। दूसरा, सैमी, you were asking something. No, ma'am. I was just trying to add to your point, like good and bad are feeling based. So if we give them a vocabulary like safe, unsafe, okay, not okay kind, so I think that will make more sense, and it's easy to distinguish. Correct. Yes. Correct. तो कौन से आपके और अभी कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए। मैं देख लेती हूँ कि मैंने अभी बात करते करते, हाँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए कि मैम हमने तो बहुत अच्छे से सिखाया, वो आपने जो सर्कल मैंने दिए हैं या नेट पे भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं दूंगी तो ही कर पाएंगे, तो इट्स अवेलेबल कि बीच का जो है, मी माई सेल्फ माई एंटायर बॉडी इज माई ओनरशिप, नो बडी कैन टच मी एनी वेयर विदाउट माई परमिशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग. Then comes the green circle, which is family. So me, my real brother, sister, my parents, my grandparents, I can hug them, they can hug me, I can sit on their lap, nobody else is. Then comes the yellow circle, where I can give just high five, and rest of the people are stranger, so I need not touch, no high five, nothing, right? So itna clarity se ho gaya. Now they are going for say some performances. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और टीचर ने ही दौड़ के हक कर लिया, राइट? सपोज उसने नहीं करने दिया, लेकिन दे आर सीइंग, सपोज मैं सैमी से मिली आई और मैं एकदम से एकदम से जाके दौड़ के उसको हक करी, देन दे आस्क दैट व्हाई यू कैन डू एंड व्हाई कांट अस. दैट इज अ मेजर 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 इश्यू नाउअडेज. और बहुत सारे बच्चों का ये इश्यू रहता है कि घर पे सब समझते हैं, एंड देन व्हेन दे सी आउटसाइड रिपीटेडली कहते हैं फ्लैश कार्ड से रॉन्ग राइट करके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दे फॉलो वेरी नाइसली, जैसे हमारे सबके बच्चे हैं, तो ये नहीं करते हैं, लेकिन घर पे आके पूछते हैं कि मॉम ये सारे तो यंगस्टर्स थे, ये सारे तो एक दूसरे को चिपक रहे थे, वो मिलते ही सारे एक दूसरे के हक किया, और आप भी तो अपनी फ्रेंड्स को हक करती हो, आप भी तो अपने माने पुराने क्लासमेट्स को, मेल्स को भी आप भी अगर मिल जाए तो आप हक करती हो, तो मैं क्यों नहीं कर पाती? सो दिस इज राइट नाउ बहुत ही ये मेरे मन में भी है, और ये एक ह्यूमन का मतलब बहुत ही नीड है ना। अगर मैं सैमी से 2 महीने बाद मिलूंगी तो हाउ कम कि मैं उसे हग नहीं करूंगी? हाँ, तो ये माँ मेरे पास नहीं है उसका आंसर. रेखा माँ, if you can say. Nina, I always find during the conferences, I watch the children, and my main objective is to teach them safety areas. But sometimes I feel we are doing something which they are watching, and they feel if they can do it, we can do it. And you know that we have always said visual learners, ye learners, wo learners. So do you think it's right for us to make a rule which says no hugging? Why don't we do that? Because we can always, be a little more demonstrative just by looking at each other or doing namaskar. जय श्री कृष्ण ही बोलो यार. यस, पर माँ ये मैं आप यहाँ जो है सब करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट, बिकॉज सी डे बाय डे दे आर गोइंग टू गेट
more and more exposure to the real Correct, world. correct. So मुझे जो आ रहा है मेरे दिमाग में, see this is the open forum, और यहाँ पे कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं है कि बिल्कुल। उसी को फॉलो करना है. जी। So we all learn by talking and through each other's experiences. तो मुझे क्या लगता है कि हमें ना उनको जो ఏరే పిల్లకాయల గురించి ఏదో చెప్తాను मैंने పిల్లల గురించి मैंने చెప్తాను డాక్టర్ एकदम దాన్ని వింటాను मैंने अभी एक इंट्रोड्यूस किया है माँ अबाउट रीडिंग द फेसेस. तो मैं इसके ऊपर अभी शुरू ही किया है एंड आई एम गोइंग टू वर्क मोर ऑन दैट कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हमें ध्यान देके वी शुड टीच देम कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच पर्सन इज नॉट ओके. दैट वी कैन डू. अदरवाइज पूरी दुनिया देख देख के कहाँ कहाँ रोकेंगे हम. It's not possible. So I have just started and I have started making a collage of all the Bollywood actor actresses. They all were smiling. In photograph, they all were smiling, but the meaning of the smile was different. So when I asked a group of 10, 12 adults कि ये सब कैसे है, माने what do you think, how they must be feeling, तो कि बहुत खुश है सब. मैं तो really ये सारे के सारे खुश है इसीलिए हंस रहे हैं. फिर आई वेंट बैक कि इसको देखो, सारे को जूम जूम कर करके कि आपको कोई बुली करता है या इफ somebody is making fun of you तब इसका ऐसा होता है एक्सप्रेशन. तो एक दो ने बोला कि हाँ, तो ये ना फन मेकिंग वाला हंसना है, ये वो हैप्पी वाला हंसना नहीं है. प्रेम चोपड़ा और तो मनोज कुमार में अंतर है. हाँ, तो ये तो एक्सपेरिमेंट है माँ. आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई वॉट एवर आई हैव ट्राइड इज माने यही है. लेकिन हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो अपार्ट फ्रॉम टच, तो ये तो हमें सिखाना ही है कि nobody can touch you without your permission. Then good, instead of good touch bad touch, it's safe or not. But safe or not कैसे जानेंगे? So by knowing whether आपको माने क्या कहता है इंसान को देख के, क्योंकि ये इनमें है माँ, आप अग्री करोगी कि ये इनमें है. they can see कि ये बंदा कुछ ठीक नहीं है या तो ये बंदा ठीक है. तो can we do something on this direction, ma? We can do it, but my point is our children are very vulnerable, Nina. Yes, very They vulnerable. love that. What They side love తీసుకున్నావు people మందా who, మంది they తీసుకున్నావా want that adulation. మందు They తీసుకున్నావా want. అంటాను Suno, Somebody please is unmute unmuted. your phones. Hello, Please తీసుకున్నావా mute అని yourself. అడిగి Brinda. Cut them, Brinda. As the person wants to ask something because I One can't second, understand. Ami, just a minute. Mr. Huh. Naraprasad Reddy, I don't know if it is by mistake that you are switching on the audio. So kindly make sure that you don't switch on the audio next time. Mr. Naraprasad Reddy, you are the one whose audio keeps switching on and off. I don't know why. Thanks, Ami. Sorry, I just needed to tell him so that he Nina, knows again. you know, when we were growing up, हमने कभी किसी को हग नहीं किया यार. नहीं किया. क्यों फिर आजकल क्यों कर रहे हैं? ये more of exposure is okay, but stick to the rules ना. हम हिंदू हैं या whatever we are Indians. और हमारे यहाँ पे you touch the feet but you don't hug because body language is very different, Nina. And I'll tell you, there might be one in that odd 10 who might not have good intention. Yes. And our Correct. children are quiet. When it suits them, they will pick up on the signals that we don't pick up. But they might not be able to know that this is not a clean look. Yes. Sometimes. So then it's very difficult for us. Like Bubbly had a dance teacher who was a male. So we took him to Singapore because she was dancing at the International Down Syndrome Day. And she thought she was in love with him. This is my fear. See, her expression is, he's looking at me, so I think he also loves me. Now he's teaching her dance, but children, they love that look. Because I think everybody likes it when somebody appreciates them. Yes. It's very common. But they don't know that we don't want them to go beyond. Yes. So my husband immediately stopped the dance teacher. उनको लगता है कि if you cut off
maybe I'm saying the next one also will be equally bad. So where we have to draw a line is just try to get them, because they don't understand. They feel bad. They're hurting the other person also. Try to understand. She always says, Mama, maybe he'll feel bad. You know, and our children are very careful about not hurting people. But I am very, very worried about what is happening in the world today. There's too much Yes. exposure. Too much exposure, and ma, Too much of this. We never had any of these stage presence. We did only classical dances, which never made your body emote and signal a negative or a signal the way they're doing today. These gyrations are very dangerous, very dangerous. And when they dance for hours together, somewhere along the line, the body builds up that need. yes, And I'm very worried when you know, like you get a DJ, you want to dance, फिर भी मेरे को I withdraw, you know, immediately, because maybe we are setting the wrong signals. And these stage props that they're using to walk up and down and teaching them how to walk, teaching them how facial expressions, they're becoming actors. You're taking them away from the real world. And I honestly tell you, our children are very innocent, very innocent. You can teach them anything, but they are still innocent. And they love people praising them. You can draw them away from a crowd by just telling them, you look so beautiful. My daughter, World Down the day before yesterday, she went to the Ripon building and somebody said they're interviewing or some such crap. Bas ho gaya uska. She thinks she's a theater artist. He's coming to interview me, only a man. They're still at 43, that urge after menopause. I don't know whether we are still there, but I'm saying that urge still continues. So try to understand that right from the beginning, if we instill a certain discipline, that discipline must be there. We are losing that discipline by telling them it's okay. Like when Devashi saw me recently for the games, she touched my feet and I felt so good. You know, ye sanskar humko unke andar dalna hi padega. Let us go back to where we started. Sanskar is very important. हमने ये start कर दिया कि hug करो. अब किसको लेकिन hug करना है, कैसे संस्कार डालोगे भी आप? तो टच ही हाँ, करने फिर को ये कह रहे हैं। फिर ये हाँ, बहुत ही सर मुश्किल पे हो और जाता पैरों है। में टच करने को कहते हैं। यहाँ है ना बात। क्या? हाँ, यही संस है माँ कि हमें ये करके रखना है। देखो, the frame which we have created for our children, we have to, make them understand, we have to make them follow. Perfect. But what about when they will repeatedly get exposure of outer world? तभी उनको confusion होना है. बिल्कुल. So the second part what I told is about जब ये confusion हो तब उनको कैसे decide करना है. ये जी बहुत important जी है. जी No, I'll give you examples, Nina. I think you're perfectly right when you say teach them. But maybe 4 out of 10 will understand. बाकी 6 को तो उनके दिमाग में जाएगा भी नहीं. Okay? That is definite. What I'll tell you from personal experience. During the Raipur ka jo conference tha, they started this, what is that, rap walk or whatever walk. Bubbly said only one thing, I will do only Krishna song. I am not doing, and they said, you be the showstopper. She said, I'm not stopping anybody. She didn't know what was a showstopper. उसको लगा कि सबको stop करना है, मेरे को नहीं करना है. Now you understand we are introducing to a different world. And you are going into that room, dressing room, and changing clothes. In front of others. Now ये this मुझे is, पहले से मैंने कभी भी encourage नहीं किया, इसीलिए आप सबको girls and पता boys, होगा. my mentally I block. Because we are telling them not to expose themselves and at the same time making them expose. So where are you confusing the brain? And one more thing which I don't like, it's about your, appearance. And whatever the marks, everything, anything you get, it starts with your appearance. So we are, giving a wrong message to them. जी जी बिल्कुल. You know something, Nina, I think we ourselves have to bring in a change
by telling the people who are encouraging all of these things, because I withdraw. I'm telling you, मैं तो I एंटर ही withdraw. नहीं हुई मेरे मैं को तो तो एंटर ही नहीं I हुई। myself cannot do ramp walks, and I cannot. But I think this time I've changed the whole thing and said, let the mothers do the ramp walk, leave the children alone. Let the children enjoy the parents doing the ramp walk. At least we know good touch, bad touch, yaar. I hope we know. हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ सैमी, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी क्वेश्चन आंसर हाँ। के लिए खोल दें। यस, मुझे लगता है आज बहुत सारी बातों के बजाय यही हमारे पास टॉपिक गुड टच एंड बैड टच वाली का इतना है कि हम इसी पे बात करें। तो जैसा कि नीना मैम ने कहा कि गुड टच एंड बैड टच के बजाय हम उन्हें सेफ टच एंड अनसेफ टच समझाएं। जितना हम समझा सकते हैं उतना ठीक है, जितना वो समझ सकते हैं उतना ठीक है। उससे आगे भी अगर कोई जगह बच जाती है उसके लिए हम हैं, और उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर करके हमें समझाने के लिए नीना मैम और रेखा मैम जैसे हमारे जो है साथी हमारे साथ हैं, तो आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। अभी इतना ही करते हैं, अभी इतना तो करते हैं, एटलीस्ट कुछ तो अपने आप को बचाने लायक, अपने आप को सोसाइटी में सही से रखने लायक वो हो जाएं। जहां नहीं होंगे वहां हम हैं ही यार, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप लोगों के कोई सवाल इससे संबंधित हो, अपने बच्चों से संबंधित या अपने आप से संबंधित, तो प्लीज नीना मैम से जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि 5:37 हो गए हैं और 6 PM पे हमें प्रोग्राम खत्म करना है। थैंक यू। समीक्षा। Yes, absolutely, Parul. Our children really know black and white, so everything what needs to be taught is correct or incorrect. There's nothing midway, or you cannot manipulate anything. And yes, they learn by teaching, and they also learn by emulating and seeing you how you conduct yourself. That is so true. And we are still together exploring the areas how we can be more fine in teaching them. As Nina rightly mentioned, that now our children are exposed so much to the outer world that we are starting to encounter such situations where we need how to address it. And together we are discussing today also a very important matter. Yes, parents, if you want to ask anything and everything, we have with us Dr. Neena Vaidya and Dr. Surekha Ramachandran. Yeah, there are a lot of doubts posted in chat box also. Neena ma'am, I'm somehow not able to access my chat box because I'm on mobile phone. So there are certain you have already addressed, but as you mentioned that in my vocabulary, I must have not understood you correctly when you were saying, giving your understanding of the topic. So I mean, same kind of a doubt when you mentioned that while the child is outside and trying to conduct in a certain manner, you come home and tell the child that was not correct, you did, or you are trying to correct it at the moment. It's not understood the way you or me will understand. exactly. So I mean, and it cannot be uniform for you, me, and everybody. Neena ma'am, is there a uniform pattern for our children? I could not get you because I was trying to read the questions. You told that there are many questions in the chat Yeah, box. yeah, small So I doubts was which most of you have covered, but yes, you will want to start from that. We will start from there only, ma'am. Chat box. हाँ, बताओ। नहीं, you were asking something, Sammy. I was just wondering, like we understand there's a certain way of way we can utilize with our advocates and with our adults to learn something, but a method or the vocabulary or the way of teaching, can it be uniform? I don't think so. I mean, No. It can't be uniform, but you can help. You are mentioning about how to express if somebody has happened outside somewhere. So how to Yes. make the child evaluate or decide whether whatever has happened is it worth mentioning, or it was good, or what. That's what you are asking. Yes, ma'am. So it can't be same for all the children. It depends on their understanding, their ability to express, और हमने उनको कितना कनेक्टेड रखा है, हमने कितना कंडीसिव एनवायरनमेंट दिया है, हमने कितनी बार बॉडी के बारे में बात की है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट टॉक अबाउट बॉडी, एंड फॉर ऑल ऑफ अस टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी मीन्स, ये सेंटेंस मैंने बहुत बार यूज किया है,
कि सेक्स एंड सेक्सुअलिटी मीन समथिंग लाइंग बिटवीन टू लेग्स, तो ये नहीं है। इट्स अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो कितना कितना दिया है हमने, कि जैसे बच्चा यहाँ पे लग गया और जितने आसानी से आपको आके बताता है, अगर उसको वो प्राइवेट पार्ट पे कुछ हुआ है, किसी ने टच किया है, कुछ हुआ है, उतनी ही आसानी से वो बता पाए, ऐसा आपने whether you have created that kind of atmosphere at your home or not, it lot of depend on that. बहुत बार क्या होता है, मैंने बहुत सारी मॉम्स को देखा है कि जब देखते रहते हैं साथ में टीवी पे, और कुछ ऐसा कुछ कॉलेज का कुछ सीन है या कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, वो सामने से बोलते हैं तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, देन व्हाट आर यू ना व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, और what are you trying to transfer to your child, daughter or son. तो ये सारी ना कंफ्यूजिंग रहती है, आप ये पूरी चीज को कैसे ले रहे हो, एंड फॉर यू हाउ हैव यू instilled the mannerism, starting from behavior, public behavior, private behavior, places. So how much the child is conceptually clear about what exactly private means, and what are the things you can do at home. Again, at home also, drawing room is comparatively a public place, bedroom is private but not absolutely private. With with your permission, somebody can sit with you in your bedroom, but bathroom is absolutely private place. Nobody can be there with you in your bathroom. If these many things, if you have cleared this much, then that scenario would be different. If something has happened with your child outside, it would be easier for you to handle, it would be easier for you to understand, and it would be easier for the child to, if not verbalize, to show somehow. But if So it's not, I totally agree with you, ma'am, because it's not that we parents, are struggling to equip ourselves with the vocabulary and, the correct knowledge. But our children also, over the period of time, they get in habit of learning everything from the parent. You have to teach everything to me, so I think, and that helicopter mom concept or the helicopter parent concept has really made it difficult for a child to really express freely. And the way it comes to that, because we start judging, we start correcting, we start pushing a certain kind of a norm, which we have not. But I think we all understand what we are trying to discuss here. But I think there is no limitation to, like, if we have, I have an adult with Down syndrome, and I have never thought about public and private, because the values I have followed in my life were so that it naturally came in my child. But still there is no age limit to teach a private and public concept, because our children very, very beautifully take every concept you introduce. The only thing we struggle with the vocabulary, I believe. So it is and that's why I insist upon using emotion card, and you should put feelings. At least red, green and yellow card everywhere in your home, so that the child can easily pick and show it. So at least you know that there is something happening. So we need to address the underlying emotion and not the behavior. So we address the behavior, and without taking any action on the root cause. So that is very important. And why our children are, vulnerable? Because they are dependent, they are used to follow instructions, and they are handled by many, adults. कोई कपड़े बदल देता है, कोई जिप चढ़ा देता है, so that's why अगर somebody else is doing, who is maybe not very known or unknown, not unknown but not very known, या तो कोई फैमिली का है वो अगर कर देता है, तो they don't feel anything wrong in that. तो ये नहीं पता चलेगा कि ये intentions ठीक नहीं है. So for that, as Rekha said, हमें ही अपना जो है फ्रेम बहुत ही strong करके रखना है. So Nina, I agree with you using visual images for teaching, but some of our children are visually challenged. So that became a very big issue for me. So her looking at a person or the person looking at her never happened, because she never knew that people are looking.
Yeah, but ma, I think visual Parul also touch. has that problem. Yeah. हाँ So नहीं here what it became a big challenge trying to understand, but sometimes our children are so perceptive that when somebody touches them, they know immediately. It's Yes, unbelievable. it is unbelievable. So true. They will know that because I really believe that they have a sixth sense, Yes. and you have to believe that sixth sense. I believe it. So I know that she is kept safe because of her own being, not us. So you really, trying to teach them a lot of things. Sometimes there's a lot of confusion also, I believe, because you have to tell them, yes, this is your space. Do not come out. Do not take out all your clothes in public. ये तो बोल सकते हैं. But sometimes it becomes difficult for us to go beyond that, because unless it actually has happened and somebody has touched them, it's very difficult. Very difficult. So beyond really, I find some things very. I always believe that we go back in time and stick to the rules that we had adapted when we were growing up. So my parents would give us a slap if somebody even came close to us. So don't you know you have to move away? See, we taught our children move away. If somebody is coming close, we can still our children. Yes, you go sit on the next chair. But there are some times when I feel they like it. हाँ This is what smile तो worries me. वो तो Yes. है ही, अच्छा तो लगता है ही ना? है दिल लाइक हाँ, और बहुत सब होता है. हाँ ये तो है ही माँ और So, इसलिए बहुत we can't change the entire concept of a being. We can only try. And that's what we are all doing. Because, when we say that they want companion, they want this, maybe we are talking out of turn. Maybe we don't know what they want. yeah but माँ we have to try diligently. Just नहीं Yes. जो माने the frame we have decided, private, public, touch, safe touch, allowing, not allowing, your body is your ownership, giving them the ownership of body, talking everything about the body, that is mandatory. That Yes. is mandatory, and then rest of the things we'll have to keep on doing as the time comes, because हमें भी नहीं पता. हमने कभी नहीं सोचा था कि 70% of our grown ups माने above 30 they will want to get married. किसने सोचा था? Yes. Before ये कहीं पे नहीं था. Before Yeah. 15 years. And I think, Dr. Neena, here it also becomes very important to teach our children or tell them about the relationships in the family. Yes. There's a they understand to some extent, but actually talking about it in a way that they understand. Okay, this because media doesn't express it. Media, when you are exposed to social media or the internet or But the I TV also serials want or to movies. say, Sammy and Nina, one very important point. Do Yes, not ma'am. reprimand your children if they come Yes, and tell you that somebody touched them. yes. We have It's to I never have the trust seen a them. child's lot of fault. parents who say, and it might happen within the family. And Yes. don't force affection. बच्चों को Yeah. कि जा बुला रहा है, कब से तुझे आंटी बुला रही है, और माने अंकल आंटी छोटा बड़ा लड़का लड़की कुछ नहीं है. इट्स फॉर एवरीवन. Everyone. तो ये कुछ नहीं है. तो हम बहुत बार की कब से आंटी बुला रही है, कब से अंकल बुला रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा, जा 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 तू. ये कभी भी नहीं करना है. We But need there to again, trust Nina, I them. believe that they give you the signs. Yes. Yes. Yes, You know, ma'am. it is so Yes. amazing if you look at the way that soul is. It is the purest soul, and that will tell you. You Yes. just, I don't need to go anywhere. Yes. So Yes. Komal has a question. Yes, Yeah. Komal. And before Komal, Shalu also raised hand. Shalu, you wanted to ask something and we missed you by chance. Unmute and ask if you want to. Okay, Komal, you can go ahead. हाँ, Shalu. हेलो हाँ, हाय. Shalu. Hi. बोलो एक्चुअली बोलो. हाँ एक्चुअली धानी का कॉमन सेंस मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे जनरली होता है ना, ये अपने पापा के भी अगर ये मतलब इनर वियर में अगर आ रहे हैं वो बनियान डाली हुई तो बोलेंगे पापा कपड़े डालो पहले. तो मुझे लगता है वो हर चीज में इसको डरा एक मुझे मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि डर नहीं जाएगी अगर मैं इसे हर चीज में पॉइंट आउट करूँ, ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं, क्योंकि ये अपने आप से समझ रही है.
जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी समझाया नहीं, विद टाइम्स हमने सीख लिया, समझ लिया कि अपने इन लॉज से कैसे बिहेव करना है, अपने फादर से कैसे बिहेव करना है, अपने भाई से कैसे बिहेव करना है। तो क्या Yes. ये चीज में नेचुरली आ सकती है, या मुझे मतलब एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे? Nina ma'am. शालू पहले तो मैं ये बताऊंगी कि उसके पापा क्यों ऐसे उसके सामने नहीं डांटे नहीं निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाई चांस अगर ये वो तो नहीं, ये सबसे पहले बंद करना अरे चाहिए। नहीं नहीं वैसा नहीं है, उनका नेचर ही नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं। पर बाई चांस अगर जैसे ये वॉशरूम से आए हैं तब भी ये देखेगी नहीं, मतलब बनियान या उसमें आए हैं तो वैसे मतलब जैसे हो जाता The है values in नॉर्मल the इंडियन families कल्चर are में। such that, it हाँ, is ये it is इंडियन कल्चर value है। system. मतलब Yes. ऐसा नहीं है कि मैंने पापा को कभी मतलब बनियान में नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, मतलब कभी तो हो जाता है। पर इससे पता है कि जब Nina, आप many पापा houses the कपड़े fathers come out in the towels. टावर से टावर वाला भी नहीं है, मतलब हाँ इतना नहीं है, पर बाई चांस जैसे हो तो मतलब इससे पता है वो चीज, हर हाँ, चीज है ना, फिर पता भी ये मान फिर लेती है। भी पर हाँ, फिर भी शालू सिखाना है, हाँ क्योंकि जी। आपको ये नहीं पता है कि ये जो ये बोल रही है ये हम्म कहीं से सुना हुआ है, या तो समझ से बोल रही है, या तो इतना अगर समझ से बोल रही है दैट मीन्स उसको बाकी की समझ है कि नहीं। तो सिखाना तो है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, इट शुड स्टार्ट एट एज अर्ली एज 2 years ऑफ एज। तो 1.5-2 साल के बच्चे हो जाए, हमको उनके साथ नहाना नहीं है। अगर नहाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि फैमिली ऑन संडेज वो साथ में नहा के, माने इट्स फन टाइम, तो स्विम सूट रूल फॉलो करना है। फीमेल से है उनको वो स्विम सूट पहनना है, मेल्स जो है उनको बॉक्सर पहनना है। पेरेंट्स को कभी भी ऐसा सोच के कि ये भाई बच्चा है, उसका क्या है करके उसके सामने कपड़े नहीं बदलने हैं। दरवाजा खुला रख के कपड़े नहीं बदलने हैं। कभी भी टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा खुला नहीं रखना है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में है तो उनको भी बहुत ध्यान करके ऐसे नहीं आना है। अगर एजेड है और इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट ड्रेस्ड इनसाइड द बाथरूम, देन इट्स बेटर टू बाय अ बाथरोब, वो डाल के आना है, फिर रूम में जाके बंद करके करना है। These are few things everyone has to follow since very 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 early age, और ये सिखाना ही पड़ता है। अदरवाइज दे आर, माने अगर अगर हमें बच्चों के साथ नहाना नहीं है, क्योंकि द मैसेज वी ट्रांसफर टू देम इज कि मम्मी अगर ये एज पे ऐसे कर सकती है, इफ शी कैन रिमूव क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैं भी कहीं पे भी कर सकती हूँ। सी दीज आर द इनडायरेक्ट मैसेजेस वी ट्रांसफर टू देम, तो ये कभी भी नहीं करना है। Yes. क्योंकि धानी जो है ना, धानी Shalu, इंट्रोवर्ट है। I think we move on to next, and we will ओके। get back to, we have Neena ma'am with us. We will get her again, ओके, right, Shalu? थैंक यू। So थैंक यू। Komal, if you can ask. या गुड इवनिंग मैम। मेरी एक्चुअली 2 साल की बेटी है। मैं उसको हर रोज आके पार्क लेके जाती हूँ। पहले एक्चुअली 6 मंथ शी वॉज 6 मंथ्स ओल्ड। वो किसी के पास नहीं जाती थी, सिर्फ मेरे और हस्बैंड के साथ, यानी कि उसके मम्मी पापा के साथ ही वो रहती थी, और बाकी सब आके जाते नहीं स्ट्रेंजर्स के पास। सो द वे शी वॉज ऑल्सो नॉट मूविंग विद अदर्स। बट मैंने सोचा था कि उसको आके सोशलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि वो सबके साथ थोड़ा बहुत मूव करे, बट वेरी सोशल। क्योंकि मैं पार्क में भी जाती हूँ ना, तो वहां पे 100 लोग होते हैं, बहुत भीड़ है पार्क में। मतलब होते हैं 50 लोग तो होते ही हैं। तो कोई भी जेंट्स भी बुलाता है ना, तो वो आके चली जाती है, मतलब उनकी गोद में जाके बैठ जाती है, उनके शर्ट पॉकेट में हाथ डालती है वो। तो आई थिंक ऐसे कैसे वो बदल गई, शायद मैंने उसको बहुत सोशलाइज कर दिया। Komal ma'am, can you? I don't know how to change this behavior. Yeah, Komal Komal. ma'am, don't put the video on. No, your question Yeah. will not be very audible, I think. नहीं, मुझे Neena ma'am, समझ में आ गया। you could Yeah. hear the Yes. the मुझे concern of a parent. Yes. हाँ, Neena ma'am. मुझे समझ में आ गया है। कोमल, अभी आप म्यूट पे चले जाओ, फिर से अनम्यूट करना। अच्छा, देखो, पहले नहीं जाना, और वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंटल थिंग कि बच्चे शुरू शुरू में नहीं जाते, दैट इज वेरी मच नॉर्मल, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। अभी सबको बुलाने से जाते हैं, और आप अब सोच रहे हो कि मैंने उसको ज्यादा सोशल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज गुड टू गिव एक्सपोजर विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग।
तो आपको जो भी आप कर रहे हो सोशलाइजिंग करने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा सोशल होंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना अलग अलग लोगों को देखेंगे उतना उनकी रिसेप्टिव एबिलिटीज बहुत होती है। तो बहुत सारी चीजें बिना सिखाए सीखेंगे, जैसे कैसे बैठना है, उठना है, व्हाट आर द मैनरिज्म, अगर पब्लिक प्लेस में हो तो कैसे, सबको देख के वो सीखेंगे। सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, you have not done anything wrong by taking her and giving her exposure to the society, various different type of people. Now coming to your question कि कोई भी बुलाता है तो चली जाती है, here comes the concept of public and private, here comes the thing कि known and known, so family first circle, second circle and strangers। तो ये आपको बहुत बार बार, और 2 साल की बोला ना आपने, 2 साल की बोला ना? हाँ हाँ, 2 साल। हाँ, 2 साल। तो वेरी Yes, राइट madam. टाइम, हाँ वेरी राइट टाइम है ये, उसको ये सारे कंसेप्चुअली देने के लिए। यूज लॉट ऑफ विजुअल्स, यूज बहुत सारी, आप खुद बात करो, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाओ, और ये चीजें उसके जहन में डालो कि ऐसे किस किस को आप जा सकती हो, किस किस को आप छू सकती हो, ये सारी रिपीटेडली बताना है। वेरी राइट टाइम है, वो समझेगी, नॉट टू वरी। इतना है कि अभी बहुत सारे लोग होंगे और 2 साल की है, बहुत छोटी है, तो ध्यान रखना कि कहीं किसी के माने आपकी नजरों से कहीं हट न जाए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एट पब्लिक प्लेसेस टिल द टाइम शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ सबसे बात करनी है, सबसे बोलना है, लेकिन ये दायरे में रह के, तो ये करना है, अदरवाइज नथिंग टू वरी। बहुत ही राइट टाइम है। Thank you, ma'am. Thank you so much. यस कृतिका। Hi, ma'am. Good evening. Hi, Yeah, good it was a very wonderful session. Able to hear. यस It is actually in the right time that we get to listen to this. Probably I'll have to translate to many of my parents here down south. Most of them do not get to understand a lot of Hindi. Yeah, I will take it a point to transfer this knowledge what we got today to many of them. Kritika As is a our suggestion. spokesperson for Tamil Nadu. Like you have DMK spokesperson and Congress, she is our spokesperson. सब जगह एक spokesperson local language में. She is our spokesperson. She writes stories for us. Oh, very good. She's Thank a you, ma'am. lovely, lovely person and very, very, cryptic remarks and clear she is. She'll Thank you. convey this in Tamil tomorrow itself. I will do that, Ma. Yeah. So what happened is very recent incident when we were coming back from Delhi in the train, we were disturbed by people, and we were disturbed not for us. They were our children were disturbed in the sense they were touched inappropriately. They were like called by names. They were touched near lips. They were touched near hip. And though after telling 3-4 times, it still happened. It was a couple of drunken commandos, so to say. And we told them very boldly not to come to our children, but it did happen. But what I could see is rather than showing flashcards, as you told, teaching them good touch, bad touch by textbook or incidents, just verbally, the real instance did help. Because what happened is my daughter, Ria, she took the phone when the argument was happening, she dialed her father. And because she got one number wrong, the call was not going. And I was assuring her everything is okay, everything is okay. But that the presence of mind, to call father with the number. And because call was not getting connected, she took the WhatsApp and she was sending all the drama that was happening there as voice notes. So in the middle of the night, she was sending all that conversation. We really had to go to the extent of calling the RPF in Vijayawada. And a little, we didn't get much help, but yeah, the passengers around got sensitive and they were very protective till Chennai. But what I would say is, as Ma was telling, Rekha ma'am was telling that why are we doing something out of our culture, going and hugging, things like that. Let us do only namaste, let us do only namaskar, those kind of stuff. Because we are giving telling something and doing something. It really confuses them.
Yes, And correct. yeah, true. And something like we should really teach them self protection, in the sense, if you're not okay, stay away. Show something as not comfortable, or shout. Do some action. We have a lot of non-verbal kids. I came across a lot of boys who are 8 to 10 years, but still not verbal yet. They also face such situations. So I think more we should really educate them practically, and also teach them how to manage when they are feeling. The feeling matters a lot here. When they are not okay inside, they have to give a shout out in any way possible. If not verbally, they should do something. I think that one thing which every parent should do as an emergency teaching, like, I'm not comfortable, either you shout, you move out from the place, or do some weird noise that you get an attention of crowd. So I feel that one thing also would help to Yeah. make them gather attention in a public place. Yes, and Also, we Kritika, should tell them not to do it also. Yeah, they should not go and hug. All that is there. But for that, first, we as parents, I think from yes, IIDSC, and Kolkata, Kritika, we are all going to do only namaste, no hugging. yeah, So and we are really giving Kritika, them one and Kritika, teaching them something. Yeah. Kritika, we are doing self-defense workshop for all our special need adults, and it is working wonderfully well. यहाँ पे हम एक्चुअल में वी आर एक्चुअली डूइंग सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स, एंड इफ पॉसिबल Rekha ma, this time I don't know whether we can we can call him and keep one self defense workshop, because We will. that guy is excellent, ma, excellent. Probably, Nina, Neil, last time he didn't come because he had some other thing. We had even asked him to come. It was all Yes, I know. But this time we will, I'll see to it that it happens. Okay, And if not him, if he can't, we will ask his team to Okay. come and do. Because Very he good. yeah, teaches probably excellent. age-wise, ma'am, because somebody less than 6 years needs a different intervention. Somebody who's 6 to 10 needs a different intervention. Yes. And girls and boys going through adolescence need a different intervention. So in that way, I think we should teach them. And Yes, when they cross those we stages, are doing, we are yeah, doing this, Kritika, at here at local level. We are yeah. doing this. बहुत बहुत Okay, ma'am, we'll get to learn from you. Yes, yes. Okay. Thank you. Thank you. उषा जी, Sammy, आपका Parul, आखिरी क्वेश्चन ले Yeah, रहे हैं। ma'am. we have started creating the next generation of Yes, very ma'am. evolved individuals. Yes, ma'am. Nina, Yeah. don't you Thank feel you proud? so much, Kritika, for sharing that anecdote, because until unless we know it is happening around us, we do not get alert. And when it Yes. becomes an issue within our own family, we realize that how to address it. So thank you so much. That gives us more reasons to hold such kind of discussions often. Nina ma'am, Usha is raised, and Yes, Usha. let's go to Usha. Yeah. Thank you, Kritika. Yeah, Usha. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Usha. सैमी एक तो हमने राष्ट्रपति भवन में बहुत मिस करा सैमी को। नहीं, राष्ट्रपति भवन नहीं, विधानसभा बहुत मिस कर रही सॉरी है। विधान एक्चुअली उषा को तो विधानसभा कौन से जगह पे हमको था, यहाँ पे पर्पल फेस्ट हुआ, ये हुआ, शी इज कंफ्यूज। इतना सारा मार्च में चलता है ना, कंफ्यूज। मार्च इज सुपर बिजी। यस उषा, कमिंग टू यू बैक। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये, हम लोग की एक सोसाइटी है, तो मतलब ज्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है, इसमें टोटल 20 फैमिलीज रहती हैं। तो आराध्या क्या करती है, 3 घर ऐसे हैं, चलो एक में तो उसकी फ्रेंड रहती है, पर 2 ऐसे हैं, वो है ना नीचे जाएगी, मैं देखती रहती हूँ, वो उनके घर चली जाती है, 3rd फ्लोर है, तो जाके सीधा उनके घर घुसती है। तो मैम मैं उसे समझाती भी हूँ ऐसे नहीं जाते, बट उसे मैं कैसे समझाऊं? वो जब भी जाती है ना, देखती है उसकी बेटी बालकनी में, वो सेम टाइम चली जाती है। बेटी बड़ी है काफी, लेकिन वो चली जाती है। इसे कैसे रोकूं, या क्या सोशलाइजेशन के तौर पे जाने दूं, समझ नहीं आता। नहीं, लेकिन उनका क्या रिएक्शन रहता है? हाउ डू दे ट्रीट मैम हर? उसकी एक्चुअली उनकी बेटी से मेरा कुछ ज्यादा उनसे है नहीं, बस उसकी बेटी इसे आराध्या को बुलाती है, करती है, तो जैसे उसने आवाज दी सेम टाइम हो जाती है, ना तो माँ से पूछती जाना है नहीं जाना, हाँ, तो वो क्या चली जाती है। तो उसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इफ दे आर नेबर, इफ दे आर वेलकमिंग हर, इफ शी इज गेटिंग गुड गुड अटेंशन, एंड तो अच्छा है ना, इसमें क्या है? इफ दे आर गेटिंग एनॉयड, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर इफ दे आर ट्रीटिंग नहीं वैसे तो वो खुद ही नहीं, जो जिन्हें पसंद करते हुए और घर है वो किसी में जाते, 1-2 फैमिली उसे पसंद नहीं करती, वो नहीं जाती, उनसे सीधे वो बात ही नहीं करती आराध्या। खैर, और इफ शी इज नॉट एंडेंजर्ड एनीवे, तो फिर क्या है? जहाँ पड़ोस में, हम तो पूरा दिन पड़ोस में रहते थे।
वो तो है बस यही था हाँ मुझे कि इसे तो जाने अगर दूं नहीं, हाँ नहीं क्योंकि नहीं उसके ना एक्चुअली ना वही ना है, थोड़ा सा उसके 2-3 ब्रदर भी हैं, तो थोड़ा सा मन में लगता है कि 1 घंटा हो गया आई नहीं, अच्छा, क्या मुझे लगता चल है रहा है। इसके हाँ सिखाना है, अगर ये है तो कहीं पे भी जा, पर हाउ टू टेक टेक केयर ऑफ हर सेल्फ ये सिखाना है एकदम से। फिर कोई भी हो, माने किसी के भी घर जाती हो, भले ही चाचू के और मामू के पड़ोस में कहीं पे भी जा, उसको ये पता होना चाहिए कि माय बॉडी, आई एम दी ओनर ऑफ माय बॉडी, एंड कोई भी मुझे मेरी बॉडी को नहीं टच कर सकता। और ये सिखाना है, ये अदरवाइज गोइंग टू नेबरहुड इज गुड इफ दे आर ओके मैम, वेलकमिंग। एक एक आराध्या का क्या था कि ये है ना, शुरू से ये ना लेडीज को तो हक कर लेती, जेंट्स से कभी हक नहीं करती। और आजकल इसका है ये बड़े जो बहुत ज्यादा इसे एजिड लगते हैं उनके पैर छूने लगती है, और जेंट्स से हाथ जोड़ के नमस्ते करती है। वेरी और गुड। मेरा जैसे जैसे अभी तुम आपने स्वर्ग कहा में ना, हो कई बार मैं उषा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम स्वर्ग में हो देवी, तुम कुछ बात जैसे करो, जैसे तुम्हें तो कुछ अभी करना ही नहीं है। जैसे अभी मैम ने बोला ना कि हमें फोर्स, मैं कई बार कर देती हूँ कि कोई आंटी बुलाती है तो नहीं ये नहीं जाती नहीं है, तो मैं ही कह रही थी जाओ आंटी बुला नहीं रही है नहीं चलिए नहीं, जाओ। फोर्स नहीं तो करना है, अफेक्शन फोर्स वही, नहीं करना है। लेकिन मैंने अभी गेम्स में देखा था, हम लोग गेम्स में गए थे तो वहां पे एक यूट्यूबर आए हुए थे, तो आराध्या को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये उसने हक भी करा, उस मतलब लड़का ही था वो, तो उसे किस भी करा। तो मैं सरप्राइज थी कि अब उस चीज को उसे समझाऊं क्या फिर, क्योंकि नहीं उससे उसको सभी लेके, नहीं एक मिनट उषा, उसको लेके बात नहीं करनी है। यू डोंट रिपीट द सेम इंसिडेंट्स, बिकॉज बाय डूइंग दैट यू आर रिपीटिंग द एक्सपीरियंस, यू आर पिन पॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। वो हो गया, ओके मैम। खत्म। अभी उसको लेके मत कहना कि उस दिन क्यों उसको हक किया, उस दिन क्यों नहीं उसको मैंने, ये नहीं। हाँ अभी उससे नहीं कुछ नहीं नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूं आपको कि वो इंसिडेंट पे क्लिंग नहीं होना है, बट आपको ये अभी इसको साइड में कभी भी नहीं, उसका जिक्र नहीं करना है। ठीक है मैम। जनरलाइज्ड वे में आपको उसको बताना है कि यू ऐसे किसी को हग नहीं करना है, फिर क्यों ये सारा जो है वो करना Let's go in for a bath. है ना। ठीक है, Nobody's coming to play with you now. थैंक यू मैम, Nobody's थैंक यू not सो मच। coming to play. जी And जी when you have जी, ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उषा और समीक्षा। हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ आई पहुंचे हैं, लेकिन जितना मैंने और समीक्षा ने आज रेखा माँ को और नीना मैम को सुन के जाना है वो यही है कि एक स्पेशल बच्चे का पेरेंट होना दो धारी तलवार है। आपको इधर भी जाना है, आपको उधर भी जाना है। आपको अपने बच्चे को समझाना भी है, गुड टच बैड टच, सेफ एंड अनसेफ, और उसी के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मना करने से आप उसे डिप्रेशन की तरफ ना धकेल दें, या वो अपने अंदर ही ना दब के रह जाए, उस तरफ ना धकेल दें। दूसरी तरफ आप एक टीनेजर बच्चे या एक एडल्ट बच्चे के पेरेंट भी हैं, तो आपको कोई हक भी नहीं बनता है पूरी तरीके से किसी की भावनाओं को फील करने से आप रोक सके। मानवाधिकार की भी बात यहाँ पर आ जाती है। और एक एज पे, एक सर्टेन एज पे अगर एक तरह के इमोशंस बच्चे फील नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर वो वहां उसे दबाएंगे तो मुझे लगता है 30s 40s में जाके जो हमारे बच्चों को डिप्रेशन आ जाता है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से आता है कि बहुत सारे नो वो अपनी लाइफ में सुनते हैं। अगर हम ये करके देखें कि सुबह से शाम तक कितने नो हैं जो हम हैंडल कर सकते हैं अपने हस्बैंड, अपनी सास या किसी के भी, तो हमें उतने ही ना अपने बच्चे को कहने चाहिए। मैं सबसे पहले कहूंगी, सबसे पहले अपने बच्चे की रेस्पेक्ट करिए। जब आप रेस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप वो सही रास्ता समझ जाते हैं जो आपको अपने बच्चे के साथ अख्तियार करना है उसकी सेफ्टी के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि हम ऐसे ही गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और इसी तरीके से अपने बच्चों को कहीं ना कहीं तो जरूर पारुल, लेके पारुल जाएंगे। एक एक सेकेंड, बस एक चीज और बताऊंगी। आज मैं राधे के स्कूल गई तो उसकी कंप्यूटर वाली मैम से बात कर रही थी, तो बड़ा हंस हंस के राधे के लिए बात करी, तो मेरे से कान में बोलती रहती नीचे आओ, कान में बोलती है ये मैम मुझे डांटती है। सही बात है। उसे लगा मम्मा बोले कि ये मैम डांटती, तो ये मम्मा मैम को बोले कि इसे मत डांटो। बिल्कुल, तो शाम दाम दंड भेद करके हमें इस सब से रेखा निकलना ही है, और कहीं कहीं किसी छोटे से हक को, किसी छोटे से किस को माफ भी करना पड़ेगा, कुछ देख के इग्नोर भी करना पड़ेगा, लेकिन सीरियसली विजिलेंट सीरियसली। रहना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ अगर पेरेंट्स अवेयरनेस है, अगर एक मदर अवेयरनेस है, तो जितना उसने सिखा दिया, जितना वो सिखा पाई है, उसके बाद में अगर वो अवेयर है तो कुछ भी गड़बड़ कहीं नहीं हो सकती है। रेखा।
Actually, we need a second episode with you, Nina, because this is not enough time. Because Yes, I ma'am. have बिल्कुल so many बिल्कुल. queries on my brain, which I'm watching through the games. I've been making my notes, and I wanted to get clarification for the parents. And बिल्कुल. there are so many things that we have to help the parents because they are so confused. हाँ Because माँ. sometimes you get angry and you drag the child away, which is not the way you do it. You don't do that because somehow it gives a very wrong impression of the parent. They don't want to, but they do it because they think the child is annoying. So I'm very worried about a lot of issues. Brinda, can we request Nina and her beautiful self to come back next week, because we need to do a continuation. This is the most critical point in my life, where they are all turning into adolescent phase and very, very confused parents. Yes, Very yes. confused. माँ क्या हाँ. Actually, I did want to request you. To be very honest, I was just thinking that after the session, I'm going to call you and say, ma'am, one more session, because this time Yes. you've addressed. You might लेकिन touch हम a light. No, नीना मैम से great पूछ ही लेते minds. हैं, नीना मैम अगर वो अवेलेबल है नेक्स्ट वीक कौन और सी? कब चाहेंगी? Next week 30th है. हाँ. या एक हफ्ते का ब्रेक दे दो यार नीना को. We'll do the next week. नीना 5th, हाँ, 6th मैं को वही करें? देख रही हूँ माँ. हाँ हाँ. Okay, 5th, 6th is better. We'll ask the parents नहीं. to digest this and come back. Okay? You put this recorded thing, Brinda, on every channel. Let them see it. Send it out to them saying, watch, learn, come back and ask. Because हाँ. we need a bigger question and answer type of situation, where at every situation, what do I do? So that will open the Pandora's box and you will have lots and lots of answers. You have anything to say, Arjun? Hi. Hi, You want Arjun. me to go and play Holi now with him? Yes, I know. In the middle of the night only इनको होली का याद आता है, and we don't have time at all. So yes, thank you so much, Nina. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, ma. Thank Hi, you, ma'am. thank you, girls. Hi, Nina ma'am. Yeah, and Sammy, enjoy your Gujarat Hi, ka hi. winter. Rekha Have fun. ma'am, namaste. Rekha ma'am, namaste. Okay, bye. Namaste, Bye. namaste. How are you? प्रतीक्षा, मैं तो तो सेशन को मैं एंड करें? हाँ आप हाँ. रश्मि को ले मुझे जाइए, भी जाना है. अब रश्मि को ले जाएगी. बहुत तंग करती है वैसे भी Thank you, आजकल, बहुत Sammy. तंग Thank you, करती Parul. Thank you, है। Yeah. Nina ma'am. Thank you, Ma. thank you, girls. Thank you, Okay. Binda. Thank you, everyone, Bye. and Finishing have a session happy now. Holi That's my and favorite safe time. Holi. Happy Holi to you. Happy Holi, everyone. Happy Holi, happy Holi. See you all next week. Happy Bye-bye. Holi, Nina ma'am.